So monthly household income is 2.15 lakhs. At the end of the year, we almost end up saving what she earns, Yeah. and literally all of the expenses are equal to what I earn. बट एक इंसान की सैलरी, ठीक है, उतना अमाउंट खर्चा हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा अमाउंट आई एम गेसिंग बच रहा है. तो 9 साल बाद आपका 15 लाख का खर्चा 30 लाख का है. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज मैं मुंबई के बोरीवली एरिया में हूँ और मेरे साथ है सागर और पूर्वी. दे आर अ कपल एंड दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस मेनी इयर्स. आज हम उनसे बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंसेस. पहले आप ये बताइए कि आप कितने साल से मुंबई में रहते हो? Yes, so हम लोग born and brought up हैं मुंबई से. So yeah, practically our whole life. ठीक है. एंड आप लोग अभी इंडिविजुअली क्या क्या करते हो ये बताइए. So I work with an MNC as a client success manager. So I take care of the existing clients for my company. So it's basically a client servicing job, which ठीक I'm है. doing since 6 years. Okay. And overall, I've been working since 12 years. व्हाट अबाउट यू? आप अभी करंटली क्या कर रहे हो? Yeah, so I'm working with an MNC in the HR team. So primarily I focus on talent management. So I also have a work experience of 12 years in learning and development. अमेजिंग अमेजिंग. एंड आपका कितने साल का एक्सपीरियंस? 12 साल. 12 साल का. आप दोनों ने क्या पढ़ाई की है? Yeah, so we both are MBA. Okay. Yeah, so he's From the same college. That's where we Yeah, met. yeah. Oh, nice, nice. Currently, what is your in-hand monthly income and your total compensation? Okay, so in hand, after tax, I get 1 lakh Okay. a month, and my total compensation is about 13, annual CTC, Okay. because it includes some variable component. Okay, but अगर in hand 1 लाख आ रहा है तो total compensation तेरा कैसे हो सकता है? Like I'm sure like tax wax कटता होगा, right? कटता So है. what is the total? No, but it's the fact. अच्छा. Yeah. Okay. So there's very less deduction from, because they have some laws around that. So standard deduction करता है, PF करता है, and that's Standard it. deduction is 200 rupees. Yeah, professional tax. TDS कटता ही नहीं है? TDS नहीं करता. Oh, okay. Yeah. ठीक है. What about you? What's your total compensation and how much do you draw Right. in hand? So my annual CTC is around 16 lakhs. So in hand उसमें से 1,30,000, 1,15,000 जैसे आ जाता है. And उसके अलावा I do get a decent bonus about 7 to 8 lakh rupees per annum. So वो भी समझो टैक्स काट के 5-6 लाख के आसपास in hand आ जाता है. So monthly household income is 2.15 lakhs. Plus there is a bonus every now and then on an annual level. ठीक है? Correct. Okay. अब आप दोनों अकेले रहते हो? Do you have anyone else in your family? Do you have kids? What's the current family situation? So it's just us in this house, and our parents live nearby. Okay. So yeah, Yeah, no kids yet. no kids So yet. you guys are like a double income, no No kids kids. family. Yeah. Yes, you family. can Yes. call it Ding. that. Ding. It's a new Yes. thing. It's a Yes. revolution in the US and it's also started to catch up in India. The idea is that if both the partners earn a lot and if they do not have, those small responsibilities, then, the overall quality of your life enhances. आगे जाके ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होने वाली है जिसके वजह से आई फील एटलीस्ट अर्बन इंडिया का जो एवरेज चाइल्ड पर कपल है वो तो गिर ही जाएगा. ठीक है. एनीवे नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसेस, राइट? ये घर क्या ये आप ओन करते हो? क्या ये रेंटेड है? व्हाट्स द सिचुएशन? ये rented है. ठीक है. एंड व्हाट्स द करंट रेंट? 27,000. 27,000. ठीक है. उसके बाद the two other essential expenses are travel, like daily travel, and food, groceries, everything. So firstly, how often do you guys have to travel to your office? So mine is a hybrid setup. मुझे इतना travel नहीं करना पड़ता. Maybe once a week to office, but my office is far. तो approx 3,000 per month मेरा हो जाता है. Okay, if I- 3,000 per yeah. month. ठीक है. What about you? Around 3,000 per month. on 3,000 commute. per month, 6,000 rupees. ठीक है. Yeah. Do you guys own a car or a vehicle? No, we don't own any vehicle. अगली चीज है food and groceries. Firstly, do you guys cook yourself or do you have a help who comes and makes food for you? Yeah, so we don't have house helps either. So I cook the food. मैं बनाती हूँ. So okay, so how much do you spend on groceries on a monthly basis? About 10,000. 10K. Yeah. 10,000. Okay, what about eating out, going out, ordering in? How much do you spend on that?
roughly around 7 to 8,000. 7 to Like 8,000. at least once in a week we go out or order in. ठीक है, तो आपके जो 3 मेजर एक्सपेंसेस है, रोटी, ट्रैवल और मकान, उसके टोटल मंथली एक्सपेंसेस है 45,000 रुपीज, Right. ठीक है, विच इज लाइक लेस देन 1/4 ऑफ योर टोटल मंथली हाउस होल्डिंग. इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, राइट, इंटरनेट, फोन, एवरीथिंग एल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में आपका कितना बिल आता है? So I think electricity bill would be around 1,500 to 2,000 rupees. Internet around 700-800 rupees. And उसके अलावा OTTs. OTT subscriptions वगैरह 1,000 रुपए के आसपास. And Also gas bill, yeah, very. gas bill again like 800 to 1,000 rupees. तो टोटल यूटिलिटी बिल सब मिला के 4 से 5,000 के 5,000 you बीच, can ठीक say. है. सो यूटिलिटी के बाद आपका हो रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है, विच इज अगेन लेस देन 25% ऑफ योर मंथली हाउस होल्ड इनकम. उसके बाद डू यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? डू यू गाइज हैव टू सेंड मनी बैक टू योर पेरेंट्स, यू नो, सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली और इन अ कंफर्ट और मोर कंफर्टेबली? Right. So I give around 16 to 18,000 every month to my parents for their basic needs and everything. And apart from that, yeah, no other sort of responsibilities. So 68,000 rupees till now, okay. इसके बाद do you guys currently have any loans? No. So about loans, the thing is we have never taken any loans. We somehow just don't believe in the concept of loans unless it is absolutely necessary या कोई इमरजेंसी हो. बट अभी उसके लिए भी ऑफ कोर्स आई हैव मेड माय अरेंजमेंट्स, बट एज सच एज अ कपल और एज अ फैमिली वी डोंट बिलीव दैट वी शुड टेक अ लोन. तो अगर आप लास्ट 3 या 6 महीने का एवरेज लो तो ऑन अ मंथली बेसिस हाउ मच डू यू गाइस एंड अप स्पेंडिंग? So इसके अलावा of course there are personal Personal. expenses like हाँ. I spend money on things I like या फिर शॉपिंग, या लेट्स Shopping. टॉक अबाउट शॉपिंग. Yeah. क्या है शॉपिंग का Yeah, सिचुएशन? so मेरा वैसे शॉपिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. I do like an annual shopping, you know, in sale I buy stuff and I use it. But more spending goes in social expenses, I would say. So we Okay. have friends over. We are always going out with friends. We also have to gift and you know stuff Yeah. like that. So that's a new sort of expense we have observed. Yeah. So almost 15K per month आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे चला जाता है. इजीली. मेरा खुद का अगर मैं और पर्सनल एक्सपेंसेस में ऐड करूँ तो अराउंड 7-8,000 और बिकॉज आई गो आउट अगेन आई हैंग आउट विद माय ऑफिस कलीग्स. तो उसमें जो भी कभी कुछ खर्चा हो गया तो वो 7-8 हज़ार रुपये. ठीक है. आपके केस में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होंगे? Yeah, so it's obviously shopping Yeah. for my personal stuff, and then of course we have our cosmetics and beauty and stuff like that. So I can say around another 5,000 per month. Another 5,000, ठीक है. तो ये सब मिला के आई एम गेसिंग कि मंथ का कुछ 1.1 लाख तो स्पेंड होता ही होगा. That's right. राइट. डबल इनकम नो किड्स का एक इजी कैलकुलेशन ये है कि अगर दोनों कमा रहे, एक की इनकम में रह लो और जो दूसरी की जो इनकम है वो पूरी की पूरी सेव या इन्वेस्ट कर लो. एंड अगर इनका भी मैथ देखे, दिस इज सेरेंडिपिटी. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो इफ इट्स प्लान्ड और नॉट, बट एक इंसान की सैलरी, ठीक है, उतना अमाउंट खर्चा हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा अमाउंट आई एम गेसिंग बच रहा है. सो इज दिस प्लान्ड और इज दिस लाइक यू नो बैठ रहा है ऐसा बिकॉज यू गाइज आर फ्रूगल? राइट. सो बोथ वेज. इनिशियली हमने वैसे ये प्लान नहीं किया था कि इस हिसाब से ही एक्सपेंसेस करेंगे. ऑफ कोर्स वी वर कॉन्शियस के हर महीने कितना पैसा स्पेंड होना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सैलरीड लोग हैं, बिजनेस नहीं है. सो वी हैव टू थिंक वेयर वी आर स्पेंडिंग मनी एंड वी ऑल्सो फॉलो अ लाइफस्टाइल जिसमें we give importance to concepts like minimalism या intentional living, जहाँ पे we always are discussing like कि ये अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो ये क्यों खरीदनी है, will it really make our life better, और या जो उसकी प्राइस है क्या उसके हिसाब से is it giving us the same kind of benefit. So ये yes, like you said, it could be serendipity कि at the end of the year we almost end up saving what she earns. Yeah. And literally all of the expenses are equal to what I earn. Yeah. And क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, you know, कि this ऐसे जीना है, we want to live a minimal life, we want to be mindful before making a purchase, ठीक है. But if I just look at their living room, right, was this a furnished flat? Yes, it is a fully furnished. Did you buy this TV? That is Yes. us, except Apart from this, Yeah. there is no other extra product in the living room. ठीक है, everything else is just furnishings or furniture provided by the owner. So I would believe them if they say that they are living a minimal life. You also mentioned कि आप कोई चीज खरीदने से पहले थोड़ा सोचते हो. कितना टाइम सोचते हो guys?
मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं काफ़ी हद तक वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला गेम खेल सकता हूँ. मतलब नॉर्मली आई ऐड समथिंग टू माई विश लिस्ट एंड देन I spend at least 3-4 weeks just thinking about it and doing more research about it. And अगर उसके बाद भी मुझे लगा कि वो चीज़ लेनी ही लेनी है, I'll still consult her once के what do you think, should I buy this or not, and maybe based on her opinion finally मैं वो decision लूँगा. और वो भी वो टाइम पे जब शायद वो चीज़ मुझे बेस्ट प्राइस में मिल रही हो, और अगर वो भी ना मिले तो अगेन I'll delay it कि नहीं है तो ये तो पहले से प्राइस बढ़ चुके हैं, तो I think I can still wait for some more time. So for me, I think max I can go is 7 days. Then I have to, like, if it's my own personal item, I'll only wait 7 days. If it's a joint decision, then we wait for like a long time. 7 days is a lot. So a lot of times when you go to the mall, Yeah. okay, and you see this new age exercise ball and you're like, Yeah. this is gonna change my life. Chances are 7 दिन बाद you will realize that you don't need it and you end up not buying it. So 7-day window is good. Okay. 7-day window is really good. I give like 14 days, but 7 days is also really good. Firstly, do you guys have like a joint account situation? Like, do you consider your money as one, or do you consider it as separate accounts? So both, we consider our money as one, but we have separate accounts because हम दोनों के थोड़े investment ideas या strategies बहुत different है, तो we don't mix them. I invest in my way and she invests in her own way. ठीक है, तो आप बताइए, how do you invest your money? So I have a very conservative approach. मैं ज़्यादा fixed income prefer करती हूँ, like debt is my preferred way. So whether it is corporate FDs or NCDs, bonds, PPF, मेरा ज़्यादा वो रहता है. And of course I've started to go and invest in mutual fund very recently, but मैंने equity पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. How much do you invest in these? Like total fixed income portfolio कितना है आपका? I will have to check my numbers, but Ballpark? You can say that half of my salary I try to invest Okay. in this. आप बताइए, how do you invest? So my investment is diversified. I focus on equity mutual funds, basically index funds, mostly Indian and US index funds में मेरा maximum पैसा जाता है. Is it automated? The investments? Automated, yes. ठीक है. SIP. तो कितने की SIP चल रही है? करीब 20,000 का SIP जाता है ये म्यूचुअल फंड्स में. Each? नहीं टोटल. Total. Like 5,000 types. Okay. And उसके अलावा I do pick stocks once in a while, और at least IPOs में तो अप्लाई करता हूँ. तो अगेन महीने का आप समझ सकते हो कि एक IPO में 15-20 हज़ार वो इन्वेस्ट हो जाता है. Okay. उसके अलावा आई ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग माई फिक्स इनकम पोर्टफोलियो बिकॉज लास्ट 2 साल में जिस हिसाब से FD रेट्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं लाइक एज अट्रैक्टिव एज 9-10%, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एज वेल. But have you read up why the fixed deposits and the bonds have started giving higher rates? So I don't know in depth. I'll explain. ठीक है. Okay. क्यों होता है? क्यों फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट अभी लास्ट 1 साल में बढ़े? ठीक है. Okay. 2020 में जब पैंडेमिक आया, ठीक है, तो इकोनॉमी पूरी शट हो गई. अब इकोनॉमी शट हो गई मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. कोई, मैं जाके डोसा बैटर नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने स्कूटर में पेट्रोल नहीं भर रहा हूँ, आप अपने बाहर जाके कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो जिसके वजह से जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी गिर गई. सो अब गवर्नमेंट इज लाइक, अब इसको कैसे बढ़ाए? तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स गिरा देते हैं. इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही गिराएंगे, बोरोइंग मनी बिकम्स चीपर. ठीक है. सो नाउ बाइंग अ होम ऑन लोन्स becomes cheaper, buying a car on loan becomes cheaper, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, लोन सब कुछ लेने लगे. ठीक है. अब जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ने लगी. सो देन द इन्फ्लेशन गोज अप. अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कम करें? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं. सो देन वी अगेन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. तो जो रेपो रेट था, रेपो रेट इज द रेट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उससे ही सारे आपके लोन्स के रेट डिसाइड होते हैं. ओके. वो पहले बहुत कम कर दिया तो लोगों ने ज्यादा लोन्स ले लिया. अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने उसी रेपो रेट को बढ़ा दिया है. ठीक है. और उसके वजह से आपके ये इंटरेस्ट रेट्स हर चीज के बढ़ गए. हाँ, तो लोन्स के बढ़ गए, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, एवरीथिंग, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आल्सो. सो इन्वेस्टमेंट साइड में भी बढ़ गया. Right. Meaning to say, as soon as the inflation comes under control, they are going to reduce the repo rates, because of which the fixed deposit rates will also go down.
Got it. तो जो आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 9-9.5% दे रहे हैं, पूरी जिंदगी नहीं देंगे। नहीं आप उसे अभी लॉक कर सकते हो, ठीक है, बट आप 5 साल से ज्यादा लॉक नहीं कर सकते हो। Right. सो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ साइकिल में आप बिना रिस्क लिए सिर्फ डेट में डालोगे तो आप अच्छा रिटर्न्स कमाओगे। रिटर्न्स ऑफ डेट इज ±1% around the inflation rate in the long term. You said you have joint goals, right? What are the 3 biggest goals financially of your life? So the first one is obviously we want to achieve financial independence or whatever people call retire early. तो retire तो word नहीं use करेंगे because we want to continue work, but एक जो pressure रहता है that we have to meet certain salary expectations per month, तो वो निकलना चाहिए, like basically financial independence, कि हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड इनकम है तो हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, वी कैन पिक वर्क ऑफ आवर चॉइस। फर्स्ट थिंग यू सेड दैट यू वांट टू रिटायर अर्ली, Yeah. ठीक है। रिटायरमेंट करने से पहले का डिसीजन ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपकी लाइफ क्या होगी, ठीक है। लेट्स डू एन एक्सरसाइज एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ मच यू नीड if you want to be financially independent and you want to retire. When do you guys want to retire? 45. 45, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आप 35 साल रिटायरमेंट में रहोगे एंड यू हैव 9 years remaining to accumulate your retirement corpus. What's your current annual expense? Around 15 lakhs. Around all 15 inclusive. lakhs. We'll take the inflation at 7%. 7%. Okay. मैं होता तो 8 लेता because you have to be conservative, right? Retirement के बाद काम नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते, right? So ideally, let's take 8%. At this rate, your estimated annual expense at the time of retirement will be 29.98 lakhs. Okay. ठीक है, तो 9 साल बाद आपका 15 लाख का खर्चा 30 लाख बन जाएगा। Okay. ऑल्सो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको क्या लगता है इवेंचुअली लास्ट अगले 10 सालों में आपका डेट में कितना वेटेज रहेगा? I think 40% and 60 in 40%. equities. ठीक है, सो 40% इन डेट which will grow at around 8%. हाँ गाइस, जब भी आप कोई भी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, जो रिटर्न्स है उसे कंजर्वेटिव लेना है, मतलब कम लेना चाहिए, ऐसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो भी एवरेज रिटर्न्स का लोअर साइड है लॉन्ग टर्म में वो लेना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड, जब भी आप खर्चों की बात सोचो उसमें आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए, बट अदर वे अराउंड, कि अगर इन्फ्लेशन का बैंड है 6 to 9%, आपको 9% लेके चलना है, ठीक है। दैट वे यू आर ओवर प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ योर गोल्स, ठीक है। सो डेट 8% ग्रोथ रेट पकड़ रहे, इक्विटी यू आर सेइंग 60%, राइट? वी कैन कंसिडर अ रेट ऑफ 10% ग्रोथ। तो आपके एसेट एलोकेशन मिक्स के हिसाब से द एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज 9%। 9%. उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपके जो खर्चों का जो स्टाइल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ योर करंट लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस विल यू ऑपरेट आफ्टर रिटायरमेंट? सो फॉर एग्जांपल, टू गिव यू मोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, व्हेन पीपल लाइक माय पेरेंट्स रिटायर, ठीक है, their kids expenses go down, Right. that's over, right? And they don't, their house is already sorted. इन सारे reasons की वजह से उनके बहुत सारे category of expenses कम हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको कितना परसेंटेज चाहिए होगा? I think same 80 to 80% would be at Correct. yeah. So 80% of your current annual expenses inflation adjusted. Yes. So as per this method, your required retirement corpus is 6.275 crores. Okay. अगर 9 साल में आप 6.275 करोड़ accumulate कर सकते हो, then you can retire comfortably. तो अगर इसका पूरा लॉजिक और अगर आपको सारी रिटायरमेंट के बारे में चीजें जाननी है, तो मैं इस महीने ही एक रिटायरमेंट प्लानिंग पे वेबिनार ले रहा हूँ, ठीक है। Okay. फॉर यू गाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे घर पे बुलाया, पानी वानी पिलाया, मैं आई हैड अ गुड टाइम विथ यू, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। बट इन दिस वेबिनार आई एम गोइंग टू फर्स्ट टीच यू गाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट, की रिटायरमेंट कैसे है, रिटायरमेंट को कैसे देखना चाहिए, हाउ शुड यू अप्रोच रिटायरमेंट फ्रॉम अ लॉजिकल एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देन आई टीच यू गाइज हाउ टू कैलकुलेट योर रिटायरमेंट कॉर्पस यूजिंग 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपको एक्सपेंसेस देखना है, बहुत सारे लोगों का अप्रोच बहुत अलग होगा, तो उसके हिसाब से हम आपको आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने में डिसाइड करेंगे। फिर वो रिटायरमेंट कॉर्पस तक कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सिखाएंगे। एंड इन द एंड, वंस द कॉर्पस इज अक्यूमुलेटेड,
how do you allocate it in a way that your regular income is sorted. ये सारी चीजें इस रिटायरमेंट प्लानिंग वाले वेबिनार में आप सबको मिल जाएगी, ठीक है. सो आई फील कि आपका जो ये वाला गोल है उसके बारे में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करते हो, ठीक है. द डिटेल्स अबाउट दिस वेबिनार इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो ये तो हो गया पहला गोल. दूसरा गोल क्या है आपका, बताओ. So दूसरा गोल ये कि we are planning to buy our own house in Mumbai. So अगर एक सिंपल 1 bedroom अपार्टमेंट भी लेना हो कहीं पे तो इट कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 1.10 to 1.30 crores in the western suburbs. हमें ये जानना था कि should we self finance it because हमारी savings are like sort of decent. हम चाहे तो थोड़ा बहुत accumulate करके self finance करें after some years. अगर आपके पास पूरा अमाउंट है भी उसके बाद भी आई फील कि होम लोन एक ऐसा लोन है जो कंसिडर करना है. कंसिडर क्या लेना चाहिए, रीजन बीइंग चीपेस्ट मॉर्गेज, चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट, राइट. मतलब आज के दिन आपको 8.5% में एक होम लोन मिल जाएगा. दूसरी चीज, अगर लेट्स से आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है. आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो, आपके टोटल सेविंग्स कितने होंगे. हाँ, लाइक अगर इवन 1 crore के आसपास भी हो तो एवरीथिंग विल बी लॉक्ड, ठीक है. और आप एक चीज सोचो, लेट्स से आपका जैसे एसेट मिक्स के हिसाब से आपका 9% रिटर्न लेके पकड़ सकते हैं, ठीक है. अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ओके, और वो 9% पे ग्रो हो रहा है, एवरी 8 years इट इज डबलिंग, ठीक है. तो 8 साल बाद वो 2 करोड़ बन जाएगा, ठीक है. इफ यू लॉक द एंटायर अमाउंट टुवर्ड्स द होम, ठीक है, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सेकेंडली, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर नॉट ग्रोइंग एट 8-9%, उसका ग्रोथ थोड़ा कम है, ठीक है. तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें कि if I'm not earning there, I'm earning here. That's not the case. Second, that's not your investment. Like residential property is your place of residence, right? That property is your place of residence, so you can't liquidate it at any point of time. And the main calculation is कि जो आपका जो 8% जो इंटरेस्ट रेट भी होगा होम लोन का, ठीक है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट में थोड़ी जाएगा. मतलब वो पूरा का पूरा जो आप पे कर रहे हो EMI, वो प्रिंसिपल को भी सर्विस करता है, राइट. सो आई पर्सनली फील आई एम ऑल्सो अगेंस्ट लोन्स, बट even if I have the savings to buy a house in cash, I would still take a big percentage of loan, like 50% मैं लोन लूंगा. And second, if you want to check the affordability of your home loan, make sure that not more than 30% of your monthly income is going towards paying the EMI. Okay. ठीक है. So 30% is the ballpark. तो अगर आपका total income है अभी 2,15,000, ठीक है, आपको 60,000 से ज्यादा EMI के तरफ नहीं डालना चाहिए. और एक और चीज है गाइस, इंटरेस्ट रेट जो फिगर है ना, वो फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेन्योर इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर आप 5% का लोन ले लो बट वो 40 साल के लिए ले लो, वर्सेस आप अगर 10% का लोन लो 10 साल के लिए, आई थिंक, आई हैव नॉट डन द मैथ, बट आई थिंक दूसरे वाले का लोन लास्ट में टोटल पेएबल विल ऑलवेज बी लोअर, ठीक है. सो सिंस यू गाइस आर वेरी माइंडफुल एंड डोंट लाइक द आइडिया ऑफ टेकिंग अ लोन, आप एक छोटे टेन्योर के लिए लोन लो, 7 साल 10 साल इसके लिए लोन लो. आई ऑल्सो फील दैट इफ समबडी वांट्स टू रिटायर, ठीक है, हैविंग देयर ओन होम्स माइट बी अ बेटर डिसीजन, ठीक है. रीजन बीइंग, यार वो जो रेंटल कमिटमेंट है ना, वो पूरा निकल जाता है. तो वो वाला मैथ भी हमें करना बहुत जरूरी है if you guys are really serious about your early retirement. तो इसीलिए हमारा प्लान वही है कि if we want to retire by 45, so hopefully by 40 years of age हमारा खुद का घर हो. So that is in next 3 to 4 years. Yeah. You have to. ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है. You have to answer all the questions without thinking, ठीक है. If for once you guys stop thinking like a minimalist, and if you had an unlimited budget, what would you gift yourself? Gift myself, I would, I think, buy a sea-facing apartment in maybe South Bombay. Okay, what about you? So I would spend my money to travel Europe. Okay, what's stopping you right now? Time commitments. Got it. ठीक है. So then you have to be wealthy time-wise, and that's why you want to retire early. Yes. Yeah. If you had an option to choose between a 10% hike in your pay or a 10% reduction in your working hours, what would it be? Me, it would be definitely reduction in working hours because I want to use that time for many things, which I have in mind.
For example, मुझे I really like to write a lot, so I would like to start a blog or invest myself in being a good writer. So वो मैं करूँगी. ठीक है. What about you? I think 10% hike because my working hours are okay. They are manageable. If you had an option of choosing a luxurious house, a very luxurious house, or one luxurious vacation every quarter, what would it be? Every quarter? Yeah. Yeah, so then luxurious vacations every quarter. Yeah, I'll go for the house because anyway he's taking the vacation, so he'll take me along. Thank you so much, guys. I had a good time chatting with you, and it's very commendable that you are actually living a intentional life with minimal materialistic pleasures. Kudos to that, and I hope that you guys achieve early retirement very soon. And I hope that you join the webinar and I am able to play a small part in your retirement planning. Thank you so much Thank for you today's so much. video. Thank you. If you liked any part of this video, do hit the like button, and if you are new to the channel, consider subscribing. Guys, बहुत सारे लोग ये videos end तक देखते हैं. 90% of the people who are watching these videos वो देख के निकल जाते हैं. Guys, please subscribe. Your love and support will keep me motivated, my entire team motivated. And guys, हमारा एक target है, goal है 1 million subscribers by March end. So please, life में पहला goal मुझे जल्दी achieve करना है. Thank you so much. Goodbye.